flower No morphology. flower morphology. So we will go on about this flower morphology, how flowers differ in structure, shape, and pattern of arrangement, etc. All will be discussed in these few slides. Flower, flower को हमने क्लास में भी पढ़ा था. It is a modified shoot. It is a reproductive shoot. And when vegetative phase of the plant stops, there is a transition from vegetative phase to the reproductive phase, and there is the induction of the flower. That is, plants flower when they need to have reproduction. And so flower is reproductive organ of those plants जिनको हम flowering plants कहते हैं और angiosperms कहते हैं. Because angiosperms are flowering plants are those plants which are most advanced, and we call them as, इनको हम phanerogames भी कहते हैं. Phanerogames इसलिए कहते हैं कि phaneros means visible, gam means marriage. इनमें जो fertilization है, इनमें जो reproduction है, that is very visible because they have the prominent flower. इनको एक prominent फ्लावर है, इनको एक विजिबल फ्लावर होता है. एंड फ्लावर को हमने एक बार पढ़ाया भी था, एक सिंपल सा मॉडल फ्लावर का मैं फिर से आपको दिखाऊंगा. ए वेरी सिंपल मॉडल. फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव शूट है, यानी इट इज ए शूट wherein there is transition has occurred, wherein the vegetative shoot has transformed into reproductive shoot. For example, we have this vegetative shoot, जिसको हम जल्दी जल्दी करेंगे. We have, and there are how many nodes in it? One, two, three, four nodes, and these are nodes. Node number one, node number two, node number three, and node number four. At the nodes पे either branches or leaves are born. Nodes पे leaves होते हैं या branches होते हैं. So I will show you how the transition has occurred and how flower is called a condensed shoot, modified condensed shoot. यहाँ पे at node how many nodes are here? एक, दो, तीन और Four. चार. This is a vegetative shoot, and this vegetative shoot transforms into reproductive shoot. This is one of the model how the transformation has occurred. These nodes, they become condensed. How nodes become condensed? When internodes get very much reduced, and Right. by that way you see node number one, node number second, node number third, and node number four, they will come to lie one above the other. They get too much compressed, and at node number one there was the two leaves, and node number two there were again two leaves, node number three two leaves. For example, this is hypothetical model. And node number four, there are again two leaves, and in the transition these outer two leaves, they become the calyx, Yes. and inner two leaves, they become the corolla. Inner two leaves become stamens or androecium. एंड्रोशियम में एक इंडिविजुअल मेंबर को स्टेमन कहते हैं. एंड इनर मोस्ट whorl becomes the gynoecium, or it becomes the carpel. So this is how the transition of a vegetative shoot has happened, and a reproductive shoot has formed, a reproductive organ has formed, which we call flower. इसलिए हम फ्लावर में जो भी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, फ्लोरल वर्ल्स होते हैं, कैलैकस, कोरोला, एंड्रोइशियम एंड गाइनोशियम, हर वर्ल के हर मेंबर को हम एक एक मॉडिफाइड लीफ ही कहते हैं. कैलैक्स एंड कोरोला आर सिंपल मॉडिफाइड लीव्स. कोरोला का एक फंक्शन है, सेपल्स का एक फंक्शन है. बोथ दीज कैलैक्स एंड कोरोला, they are not directly involved in reproduction, and they are also called, as they are not directly involved in reproduction, इनको हम एक्सेसरी वर्ल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? एक्सेसरी Accessory Accessory एक्सेसरी word. वर्ल्स. levels. और अब उसके बाद है एंड्रोइशियम एंड गाइनोशियम.
दे आर कॉल्ड एसेंशियल वर्ल्ड्स। एसेंशियल मीन्स कि इनके बगैर रिप्रोडक्शन इम्पॉसिबल है। जबकि एक फ्लावर का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, फ्लावर इसीलिए प्रोड्यूस भी होता है कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन हो जाए, एंड फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक एक मॉर्फोलॉजिस्ट, एक एक लेमैन के लिए फ्लावर इज द flower is the organ of the plant that has aesthetic value, that is used for aesthetic purposes, that is used for decoration purposes, etc., that is given as gifts. But to a morphologist, flower is a marvelous sight wherein the most amazing phenomena of reproduction occurs, जहाँ पे एक most amazing phenomena reproduction होता है, and the flower contains the all essential machinery for reproduction. आया समझ? So Yes, sir. Yes, we will share again our PPT जो हम अभी पढ़ रहे हैं। अब इस कम टू दिस स्लाइड। फ्लावर जो है इट इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनको हम एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं। एंड जो फ्लावर है इट इज मॉडिफाइड डिटर्मिनेट शूट। अब आपने डिटर्मिनेट शूट इसलिए इसको इसलिए कहा कि अभी जो ट्रांजिशन आपने देखा, जहाँ पे इंटरनोड्स कंडेंस हुए, इंटरनोड्स कंडेंस हुए, nodes come to lie one above the other, and so the vegetative shoot has become determinate, and it has become definite. It is now no more indeterminate. इसका एक डिटर्मिनेशन हुआ, इसका एक फिक्सेशन हुआ कि इसको ये वर्ल्ड निकलने हैं, इसमें ये चीज़ें होनी हैं, बस उसके बाद इसमें कोई ग्रोथ वगैरह नहीं होगा। एंड इट बियर स्पोरोफिल्स। अभी जो हम पढ़ रहे थे, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। स्टेमन एक स्पोरोफिल है, स्टेमन के ऊपर एंकर होता है जिसमें स्पोर्स होते हैं, एंड स्टेमन्स का नॉन स्टेराइल पार्ट जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। इसी तरह दूसरा एक स्पोरोफिल जिसको हम मेगा स्पोरोफिल कहते हैं, एंड दिस मेगा स्पोरोफिल एंजियोस्पर्म्स हैज बिकम मॉडिफाइड टू बिकम द कार्पल, बिकम द कार्पल। एक्चुअली Corpus. टेरिडोफाइटस में इट वाज ए मेगा स्पोरोफिल। इसी तरह स्टेमन जो यहाँ एंजियोस्पर्म्स में हम स्टेमन कहते हैं, दैट स्टेमन वाज माइक्रोस्पोरोफिल इन टेरिडोफाइटस। माइक्रोस्पोरोफिल हो गया दैट लीव which bear microsporangia and in which microspores are formed. This is all you have learned it in your Development. फर्स्ट सेमेस्टर। अब जो फ्लावर है इट इज विथ और विथआउट मॉडिफाइड लीव्स, जिसको हम पेरियांथ कहते हैं। दैट इज इट कैन हैव सेपल्स एंड पेटल्स, एंड समटाइम्स दो सेपल्स एंड पेटल्स आर modified and they have become one whorl. Now coming to second slide, next slide, see this। आया ये? Yes, sir. Yes, sir. This is a complete flower. This is a complete flower, and in this complete flower, it is perfect flower. And here everything what you know about a flower is present. फ्लावर की एक अपनी स्टॉक होता है, जिसपे जो फ्लावर का स्टॉक होता है, यानी फ्लावरिज, जिसको हम पेडसल कहते हैं। एंड दिस स्टॉक एट द पोस्टीरियर एंड इट इज समवट broadened or flattened to have the floral parts। यहाँ पर see the floral parts, this is the calyx, this is the calyx और सेपल। एक मेंबर को कहते हैं कोरोला, स्टेमन एंड कार्पल। स्टेमन्स के वरल को हम एंड्रोशियम कहते हैं, कोरोला के वरल को हम डिस पेटल के वरल को कोरोला कहते हैं, आउटर वरल्स के वरल को हम कैलैक्स कहते हैं। दीज टू वरल्स, दैट इज आउटर टू वरल्स, जिनको यूजुअली पेरियांथ कहते हैं, पेरियांथ, दे आर नॉट एसेंशियल वरल्स बट दे आर इन द फ्लावर वेयर फ्लावर इज कंप्लीट। अब दो वर्ल्स अंदर वाली, एक एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम composed of stamens and gynoecium composed of carpels. They are the essential worlds because they have the direct role in the Reproduction. Reproduction. they have the direct role in the reproduction. Look at this image yourself। आपको बहुत सारी चीजें खुद समझ आ जाएंगी because it is self illustrative।
द डायग्राम इज वेरी क्लियर एंड सेल्फ इलस्ट्रेटिव। यहाँ पे आपको एक चीज और भी दिखेगा, दिस नेक्टरी which secretes nectar. It is a gland from which nectar is secreted, and some pollinators visit the flowers only for the purpose of collecting the nectar. While collecting the nectar from the nectaries, they effect the pollination. वो pollination करते हैं. What is pollination? Pollination is simply transfer of pollen grains from this anther to the stigma. And when this happens in the same flower, it is autogamy, or it is the self-pollination. And it can happen between different flowers. And when different flowers, male flower is present in one plant, female flower is present on the another plant, that is the cross-pollination. And when when a plant is monoecious, that is some flowers of the plant are male, some are female, and transfer of pollen grains occurs from staminans to carpel within the same plant. That is self-pollination to a genetist, but to an ecologist, it is again cross-pollination because it will involve the agents for pollination, be it the agent of the animal, be it the agent of the wind or etc. Now, यहाँ पे ये सारी चीजें आपको आई समझ? फीमेल पार्ट जो है, फीमेल पार्ट, female part is the gynoecium or carpel, and you see the carpel is swollen at the base, and this carpel, इस carpel में we have ovules. यहाँ पे these जो spherical चीजें हैं इसमें गोल गोल, these are the ovules, and these ovules are born on placenta. आ गया समझ इतना? Yes, sir. हाँ। अभी आप अटेंडेंस मत करो, you remain focused for some time. Now coming to another slide. This is, आप पहले इसको देखिए, you see it कि कितना आपको खुद समझ आ रहा है. This will revise your whole floral morphology. यहाँ पर this flower is pedicellate flower. This does not have pedicel stalk. This is the sessile flower. And based on the flower sex, we can have perfect bisexual flower where there is both gynoecium and androecium, where there is both stamens and carpels. We have staminate flower where there are only anthers, and there is pistillate flower where there is only carpel. And when a flower is a bisexual, that is a flower has both sexes, the condition is called hermaphroditic, or the flower is bisexual flower. And bisexual flower should not be confused with the monoecious plant. Bisexual flower has both sexes, while monoecious plant has some flowers male and some flowers female. But plant as a whole is bisexual because in single plant there are both sexes. That is, there are stamens as well as there are staminate flowers as well as pistillate flowers or carpellate flowers. आया समझ? Yes, sir. Now coming to this slide, सबको आ रहा है समझ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक ठीक. अच्छा, this is the symmetry of the flower. आपने पढ़ी है symmetry क्या, in which how we can divide the flower, and if we can divide the flower, how we can divide it, whether we can divide it in equal halves, where we cannot divide it in equal halves, whether there isn't any symmetry. See, this is biradial symmetry. How this is bilateral biradial symmetry? We can divide this flower through two radii into two equal parts. एक तो इस रेडियस से हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या एक इस रेडियस से. सो दिस काइंड ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड. Biradial. Now coming to this one, radial or actinomorphic flower symmetry. This is when we can divide the flower through any radius, through any diameter,
into two equal halves. Now, this is bilateral or zygomorphic flower or zygomorphic symmetry or bilateral symmetry, wherein the flower can be divided into two equal halves only through one radius, only through one diameter, only through one plane. When we get two halves by having only one line of symmetry, this is called bilateral symmetry. And when there isn't any symmetry, जहां पे कोई सिमेट्री ही ना हो, वहां पे हम क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक। और Asymmetric. Asymmetric. जिस तरह आप केमिस्ट्री में एसिमेट्रिक कार्बन पढ़ते हैं, व्हेन द कार्बन इज दैट कार्बन इज कायरल कार्बन एंड दैट इज एन एसिमेट्रिक कार्बन बिकॉज दैट इज अटैच्ड टू फोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। आया समझ? Perfect, sir. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। आज कोई गेस्ट स्टूडेंट है हमारी क्लास में। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? सी, कैन यू सी इट? ये आप देख सकते हैं। Yes, sir. क्या है ये? Symmetry. Flower with radial symmetry. This is representation of symmetry we have. This is radial actinomorphic. Here you can divide this flower into two equal halves from any plane. आप इसको आप देखिए, you can see it. यहाँ से भी हर किसी लाइन से, provided the line passes through the radii, through the center, the flower can be divided into two equal halves. अब यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री में क्या है? बायलेटरल सिमेट्री में when flower can be divided into two laterals only through one plane, that is called bilateral symmetry. And see, यहाँ पे bilateral symmetry, यहाँ पे आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं only through one plane. And we have, समझ आई युवन? Asymmetry. Yes, Yes, sir. sir. आपने नाम ही नहीं बताया। जो ये लड़का है ना क्लास में, क्या नाम है आपका? Sir, Murtaza. मुर्तजा। चशियाल गोडनु क्लास ना? Sir, don was actually over and the thumbs on the eye and then I tried to. ठीक ठीक। Embro. अच्छा, Sir. आप इस फ्लावर को आप देख सकते हैं। Yes, Yes, sir. दिस इज द फ्लावर ऑफ फेबेसी, पी प्लांट का। इसमें आपको वैक्सिलरी करोला है, इसमें स्टैंडर्ड कील विंग्स कैरिना है ना? आपने पढ़ा है ये? पढ़ा yes, कि sir. नहीं? Papilinish. हाँ, पैप्लियोनेशियस फ्लावर करोला। हाँ, ये स्लाइड आपको दिख रहा है? Yes, sir. जी sir. दो चीजें हैं इसमें, यू कैन रीड इट। एक तो है, क्या है? कैन यू सी इट? आप इसको Very देख nice. सकते हैं? Yes, sir. क्या देख सकते हैं? Very nice. नहीं, इससे पहले एक था, पता नहीं कहाँ है। ये है, क्या है ये? पेरियांथ साइकली, number of whorls in a perianth, and perianth merosity, number of parts per whorl. Understand it?
एक तो है क्या है, पेरियांथ, साइकिली। साइकिल। साइकिली, यानी पेरियांथ में कितने साइकिल है, साइकिल। दैट इज पेरियांथ में कितने वर्ल्स है। कितने वर्ल्स होते हैं पेरियांथ में, बार बार मैंने बताया। यूजुअली 2। पेरियांथ जो है इसमें होते हैं कैलेक्स एंड कोरोला, कैलेक्स, करोला। बट करोला। समटाइम्स पेरियांथ ऐसा मॉडिफाइड होता है कि कैलेक्स एंड कोरोला आर अनडिफरेंशिएटेड, देयर इजंट टू वर्ल्स, and then we have in the perianth only there can be one whorl, that is there isn't a differentiation of calyx and corolla, and करोला। then neither there is sepal nor there is petal, we have in between the two, intermediate of the two, that is then called a tepal, उसको क्या कहते हैं, टेपल। tepal। टेपल। टेपल। अब पेरियांथ मेरियोसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स पर वरल, फी वरल में कितने पार्ट्स, फॉर एग्जांपल एक वरल है, यू अंडरस्टैंड इट, एक वरल है कैलेक्स, क्या है, कैलेक्स। कैलेक्स। कैलेक्स क्या है, कैलेक्स है वरल ऑफ, Calyx. कैलेक्स इज वरल ऑफ सेपल्स, सेपल्स। एंड हाउ मेनी सेपल्स आर हियर, 5। 5, सो मेरोसिटी इज 5। अगर 3 होंगे उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं, ट्राइमेरस, क्या कहते हैं, ट्राइमेरस। 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 ये क्या है, इट इज पेंटामेरस। व्हाट इज द मेरोसिटी, पेंटामेरस। मेरोसिटी इज, मेरोसिटी इज नंबर ऑफ पार्ट्स नंबर ऑफ पर पार्ट्स नंबर पर वरल। ऑफ वर्ल। अगर इसमें आप मेरोसिटी देखेंगे, इट इज कैलेक्स ट्यूब एंड इट इज यूनिसीरिएट, यूनिसीरिएट मीन्स सिंगल लेयर्ड, एंड सिंगल ईयर। how many sepals are here, 5। 5 sepals, 5. 5। पेंट। और मेरोसिटी कितनी है, 5, सो 5। दिस कंडीशन इज कॉल्ड पेंटामेरस, क्या कहते हैं इसको, पेंटामेरस। सी द सेकंड केस, सेकंड केस, सेकंड केस देखिए आप, इट इज बाइसीरिएट, इसमें दो लेयर्स है, एक है दो लेयर्स। आउटर कैलेक्स, दूसरा है अंदर वाला इनर कोरोला, वरल। दिस इज बाइसीरिएट, एंड हाउ मेनी पार्ट्स इन द वर्ल आर, ईच वर्ल में कितने पार्ट्स 2। है, कोरोला में 4 है, 1 4। 2 3 एंड 4, 3 एंड 4, सो 4। इसी तरह कैलेक्स में भी 4 सेपल्स है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड टेट्रामेरस, क्या कहते हैं, टेट्रामेरस। 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 मेरस। अब ये वाला डाइक्लेमाइडियस, डाइक्लेमाइडियस यहाँ पे दो वर्ल्स है, एक तो है सेपल का, दूसरा है पेटल का, दैट इज बाइसीरिएट, एंड थ्री वर्ल्स आर, यहाँ पे होमोक्लेमाइडियस, यानी एक ही टाइप है, एक ही वर्ल है, पेरियांथ है ओनली वन टाइप, इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू कैलेक्स एंड corolla, कैलेक्स एंड and करोला। it has two whorls, one is inner whorl, this is inner tepal, and inner tepals are 3, 1 2 and 3, outer tepals are 3, so we have overall how many tepals, 6 tepals, but the 6 six tepals। tepals are constituted in 2 whorls, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, होमोक्लेमेडियस। ट्राइमेरस, लेकिन होमोक्लाइमेडियस, होमोक्लाइमेडियस क्यों, सिंगल है। सेम। एक ही टाइप है यहाँ पे, कैलेक्स एंड कोरोला आर नॉट डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड। एक मिनट, इसको फिर से देखिए, इट इज अगेन द सेम, यहाँ पे पेरियांथ साइकिल, बाइसीरिएट डाइक्लामाइडियस, यहाँ पे दो सीरिएट है, दो लेयर्स, आउटर वाला है कैलेक्स, इनर वाला है करोला। कोरोला, इस तरह यहाँ पे यूनिसीरिएट, एक ही वर्ल है, पेरियांथ साइकिल एक ही वर्ल है, यहाँ पर है बाइसीरिएट, बाइसीरिएट किस तरह, होमोक्लाइमाइडियस, एक है, यू कैन डिफरेंशिएट इट, आप देख सकते हैं, यू सी इट, देखिए
ये अंदर वाले तीन और ये बाहर वाले तीन। ओ ओ ओ आउटर, आई 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 इनर, इनर वर्ल ऑफ थ्री टैपल्स, outer world of Outer O, three tuples. outer world of three tuples, inner world of three tuples. I is equal to 3. And so the perianth is in two worlds. Two worlds means biseriate. Seriate हो गया layer, bi हो गया दो. Homocalymidius means both the worlds have same morphology. Same morphology. It is not differentiated into separate calyx and corolla, distinct calyx and corolla. Can you see this slide? Yes, sir. क्लास में कौन कौन है? आप ये चीजें हमने पढ़ी है क्या? सारी पढ़ी है। अब ये रिवाइज हो गया। अब समझ। दिस इज दिस इज पेरियांथ फ्यूजन। पेरियांथ में फ्यूजन। कैन यू सी इट? मैं इसको जूम इन करूं? देखिए, लुक एट दिस फर्स्ट वन। आप इसके बाद यू विल ज्वाइन अनदर लेक्चर, वो 5-7 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, ताकि हम इसको फिनिश करेंगे। एपोसेप्लस और एपोपेटलस, इसका मतलब क्या है? Free sepals or free petals. सो द पेरियांथ में जो फ्यूजन है ये ऐसा ही है कि देयर आर फ्री सेपल्स एंड थ्री पेटल्स। यहाँ पर है दूसरी कंडीशन, एपोसेप्लस एंड सिम्पेटलस। एपोसेप्लस हो गया सेपल्स आर फ्री एंड पेटल्स आर सिम हो गया फ्यूज्ड। यहाँ सिम सेपल्स है बाहर, कोरोला कैलक्स ट्यूब फ्यूज्ड। एपोपेटलस मींस पेटल्स आर फ्री। सारे पेटल्स देखिए, पेटल्स अलग अलग है। नाउ वी हैव अल्टीमेट फ्यूजन, यहाँ पर दोनों सेपल्स एज वेल एज पेटल्स फ्यूज्ड है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिनसेप्लस, सिम्पेटलस और गैमोसेप्लस एंड ये वाला स्लाइड आया समझ एवरीबॉडी? Yes, sir. समझ आया? शैल वी मूव ऑन? Yes, sir. अफसर तो सॉरी तरन फिक्रे Yes, sir. पूरा Yes, sir. तो गो सैरसी रिवीजन पे। देखिए यहाँ पे पेरियांथ टाइप स्पॉट्स, ये था आपके उसमें जो Syllabus. सिलेबस में नहीं, सिलेबस में ये सारा है, आपको इन्हीं में से आएगा एग्जाम में। आप यू गो थ्रू दी डायग्राम्स। बाइलैबिएट, बाइलैबिएट मतलब इसमें Bilipid. देखिए टू लिप्स है। Bilipid. दिस इज एंटीरियर लिप, दिस इज पोस्टीरियर लिप। एंड यहाँ पर पेरियांथ की शक्ल जो है इट इज बाइलैबिएट। कोरोला ट्यूब देखिए, ऊपर से दो लिप्स। कैलिप्ट्रेट, ओपरकुलेट, यहाँ पे एक चैम्बर सा है, उस चैम्बर के ऊपर एक लिड जैसी